Okay, these are the numericals for the chapter Solutions, Real and Ideal, S.Y.B.Sc, Pune University. There are only 2-3 types of questions in this chapter. This is based on Raoult's law. So you have two liquids, their number of moles are given, vapor pressure, total vapor pressure is given. You have to find out the vapor pressure because of pure C or pure D. Before that, let me just go to the formula. This is the formula that we're going to need. PT, this is the total pressure, is equal to, now you have two components C and D, mole fraction of C multiplied by vapor pressure of pure C plus mole fraction of D into vapor pressure of pure D. हम लोग इस फॉर्मूला को बहुत बार यूज़ करने वाले हैं. सो इन दिस क्वेश्चन हमको मोल रेशियो दिए गए हैं, दो अलग अलग. जब आपके मोल रेशियो 2:1 है, द टोटल प्रेशर इज 200, एंड जब आपका मोल रेशियो इज 1:2, द टोटल प्रेशर इज 250. सो बेसिकली हम लोगों को पीटी दिया है, दो अलग अलग मोल फ्रैक्शन में हम लोगों को पीसी और पीसी नॉट और पीडी नॉट निकालना है. सो लेट्स टेक द फर्स्ट केस जहाँ पे द मोल रेशियो इज 2:1, यानी if the number of moles of C is 2, number of moles of D is 1. तो यहाँ पे लिखा है कि number of moles of C is 2, number of moles of D is 1. मोल फ्रैक्शन का हमारे पास फॉर्मूला क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ C is number of moles of C divided by number of moles of C plus D. So 2 divided by 2 plus 1 is 2.2 divided by 3. Mole fraction of D is 1 divided by 3. So now remember I am doing it for the first case, यहाँ पे 200 वाला. So यहाँ पे if I substitute this will become 200. Mole fraction of C is 2/3. यहाँ से we don't know what is PC naught. Mole fraction of D is 1/3 and PD naught. And I am going to set up one more equation using this second case जहाँ पे आपका ratio is 1:2. Let's call this equation number 1. In the second case, the mole ratio is 1:2, so mole of C is 1, mole of D is 2. I find out the mole fraction. पहले के जैसा it becomes 1/3 and 2/3. Again, setting up the Raoult's law equation. So now, the total pressure is 250. This is the mole fraction. So this called is equation 2. And equation 2 and equation 1 में मेरे पास दो unknown है, PC naught and PD naught. And using these two equations I am going to solve them. So I am going to multiply equation 1 by 2. So equation 1 पिछले पेज में है, so it becomes 400 into 4/3 PC naught and 2/3 PD naught. Subtracting equation 3 from 2. So I have to subtract equation 2 from 3. So equation 2 को पहले लिखा मैंने, 3 को पहले लिखा like this and 2 को मैंने बाद में लिखा. Since I am subtracting, I am reversing the sign. This will become minus, this will become minus, this will become minus. ये दोनों cancel हो जाएंगे. So I can find out PC naught from here. This cancels. So PC naught is equal to 150. So PC naught is, which is the vapor pressure of pure liquid C is 150 mm of Hg. Once I know this, I can put it in any one of these, either equation 2 or 3 or 1 even, to find out PD naught. Equation 1 में मैंने PC naught को substitute किया है. So this becomes like this. So PD naught is this much. So I have PD naught, I have PC naught. So the vapor pressure of pure C is this much. The vapor pressure of pure D is 300.
Second question. Now instead of giving the moles, they have given the weight. 75% ऑफ अ सोल्यूशन इज बेंजीन. इसका मतलब है अगर आपने 100 ग्राम सोल्यूशन लिया है तो 75 ग्राम्स बेंजीन होगा, 25 ग्राम टोलुइन होगा. सो 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, 25 ग्राम्स ऑफ टोलुइन. दोनों के बेंजीन और टोलुइन के हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट्स है, इसलिए आई कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन बाय weight divided by molecular mass. Molecular mass of benzene is 78. So it becomes 75 divided by 78. This is the number of moles of benzene. Number of moles of toluene will be 25 divided by 92. Yeah. Now I know the number of moles. I can find out the mole fractions of each of them. Mole fraction of benzene is this, which is 0.965 divided by 0.965 plus 0.272. Likewise, I can find out the mole fraction of toluene, which is 0.272 divided by इन दोनों का सम. जस्ट टू चेक आप लोग देख लो, इन दोनों को ऐड कर लो, 1 आना चाहिए. 1 एग्जैक्टली नहीं आया, 0.999 आया तो चलेगा, 1.00 समथिंग आया तो चलेगा, बट द एडिशन शुड बी अराउंड 1, वेरी क्लोज टू 1. नाउ आई नो द मोल फ्रैक्शंस. अगेन आई एम यूजिंग द Raoult's law. Pressure of benzene is mole fraction of benzene multiplied by vapor pressure of pure benzene, which is given. So यहाँ ये हम लोग ने कैलकुलेट किया. This is given in your question. So partial pressure of benzene is this much. Likewise, partial pressure of toluene is this much. Total pressure will be just the addition of these two. Total pressure is 100.1. Okay. Here you have been given mole fraction of percentage by weight is of A is 80. इसका मतलब है like in our last न्यूमेरिकल में हमने सॉल्व किया, अगर 100 ग्राम A सोल्यूशन लिया तो A का 80 ग्राम होगा, B का 20 ग्राम होगा. So I know that A is this much, B is this much. Their molecular weight is given, so I can find out number of moles. From there I can calculate the mole fraction. You can do this and the answer is given here. You can match your answer. This is a different type of question. This is based on Henry's law. Calculate the solubility of CO2 in water at a partial pressure of 250 millimeter mercury. हमको Henry's law constant दिया है. We know that partial pressure is equal to Henry's law constant multiplied by mole fraction. So mole fraction can be given by partial pressure divided by Henry's constant, जो कि हमको दिया है. So this comes out to be mole fraction of CO2 is this much. Now I know that mole fraction, now I have water and CO2. So mole fraction of CO2 is given by number of moles of CO2 divided by number of moles of CO2 plus number of moles of water. And number of moles of water is always 55.56, because when you take 1 liter of water, the weight is 1000 grams, its molecular weight is 18. So if you divide 1000 by 18, you'll get this number, 55.56. So this is the number of moles of water. So हमको mole fraction मालूम है, number of moles of CO2 अगर x है, so from this I can solve the value of x as 0.01111. This is the moles. So these many moles are dissolved in 1 liter of CO2. So I can say that solubility of CO2 in water is 0.0111 moles per liter. This is similar to question number 1 and 2. यहाँ पे लिक्विड ए बी के वेट दिए हैं, उनके पी ए नॉट और पी बी नॉट दिए हैं, हम लोगों को पी ए पी बी और पी टी निकालना है. सो ऑल वी नीड टू डू इज, यहाँ पे वेट दिया है, उनके मॉलिकुलर वेट्स दिए हुए हैं, वी कैन फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, एंड फ्रॉम देयर वी कैन calculate mole fractions of A and mole fractions of B. Then using Raoult's law, I should be able to find out vapor pressure of each component. You can check this. It's very similar to what we have done in question number 1 and 2. So these are the
partial vapor pressures of A and B, and this is the total pressure of solution. Just keep in mind आपका प्रेशर का जो भी यूनिट यहाँ पे क्वेश्चन में होगा उसी यूनिट में आपको आंसर रखना है. 1 liter of water under pressure. Now ATM is pressure is 1 atm, solubility is this much. So number of moles of this is the N2 dissolved, so number of moles of N2 dissolved is 0.02 divided by 28, because 28 is the molecular weight of nitrogen. So solubility you can find out from here. Henry's law constant can be given like this. A mixture of, okay, this is similar to question number 1. यहाँ पे instead of giving weight they have directly given number of moles. तो number of moles दिए हैं, वहाँ से mole fraction निकालो. यहाँ पे pure PA0 और PB0 दिया है, हम लोग वहाँ से mole fraction निकालेंगे. हम लोग PA निकालेंगे, PB निकालेंगे, PT निकालेंगे. You can pause this video and solve it yourself, and वो ज़्यादा अच्छा है in fact कि instead of looking at it, question पढ़ो, solve करो and match the answer with the solution that I have provided. आपके पास दो मिक्सचर्स है A B, परसेंटेज बाय वेट है. परसेंटेज बाय वेट का मतलब है 60 ग्राम्स A हुआ तो 40 ग्राम्स B होंगे. मॉलिकुलर वेट्स दिए हैं, वहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, वहाँ से आपको मोल फ्रैक्शन निकालते आ जाएंगे. Okay, in this question you have been given mole fraction. सीधा पहले आपको वेट दिया जा रहा था, फिर नंबर ऑफ मोल्स दिया जा रहा था, अभी आपको मोल फ्रैक्शन दिए, तो इट्स इजी नाउ. मोल फ्रैक्शन दिए हैं, px0 py0 दिए हुए हैं, सो यू कैन कैलकुलेट px py, ऐड करो तो आपको टोटल प्रेशर मिल जाएगा. 1 liter ऑफ वाटर, या दिस इज वेरी सिमिलर टू एक क्वेश्चन जो पहले किया था. यहाँ पे 0.02 मोल्स दिया था शायद, या ग्राम दिया था, आई डोंट रिमेंबर, ग्राम ही दिया था. सो यू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, सॉल्युबिलिटी, यहाँ से हम लोग हेनरीज लॉ कांस्टेंट निकाल सकते हैं. मिक्सचर ऑफ ए एंड बी इज 1/1 बाई वेट. इसका मतलब अगर ये 50 है तो ये 50 है. सो वी टेक 50 grams of A and 50 grams of B. Molecular weight is given. You can find out number of moles, and once you find out the number of moles, you can find out the mole fractions of A and B. Okay, this is again very similar. यहाँ पे आपके पास x और y है, x और y के परसेंटेज बाई वेट दिए, यानी x अगर 60 ग्राम है तो y 40 ग्राम होगा. मॉलिकुलर वेट दिए हुए हैं, वहाँ से आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स के बाद आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं. So these are the questions that is there in your book. I hope you understand it, and if there is any other problem, you can WhatsApp me or leave a comment. Thank you very much.